first thing you have to study is DHCP. Let's see what is DHCP. So yes, you can take snips. So DHCP means Dynamic Host Configuration Protocol. So it is used to assign IP address, IP settings automatically to the clients. Up till now, what you have done is you are using manual methods, right? In the packet tracer, you have given the IP address manually, correct? To each and every system. Am I right on this? Hello. Yes. So, but in bigger organizations and almost all organizations nowadays, we avoid giving the IP address manually. Rather, we give the IP address automatically with the help of something known as DHCP. DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol, where IP address is given automatically. Okay. So if you see the IP settings, always there are two things. One is automatic. Yes. Are you focusing, Meenal and Yes, sir. Rufi? I'll show you how it is actually. Just let me share the entire screen. Can you see the entire screen? Yes, sir. So I've going to the IP settings. So there we are. Change adapter settings. दिख रहा है सबको? मीनल दिखता है आपको? यस सर दिख रहा है। ईथरनेट पे आपने क्लिक किया? हाँ, अभी राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज किया, so you'll find that इसमें IP settings आ जाएगी. Rufi, you are able to see? Yes, sir. So keep interacting in between. I just need to check that you guys are there. You take this IP TCP by 4, then click on properties. So you can see it has got two options: obtain an IP address automatically and use following IP address. ऐसे दो options है. Okay. यस सर, ये मैंने देखा है और क्लाइंट्स का चेंज भी किया आईपी एंड डीएनएस सेटिंग्स, डीएनएस सर्वर्स। चेंज किया ना आपने? आई रिमेम्बर दिस। हाँ, गुड गुड, रिमेम्बर नथिंग लाइक इट। तो जब हम ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कर रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज लुकिंग फॉर DHCP सर्वर which is configured in your network, so it is taking the IP address from that server. Is this clear? Yes. So the DHCP server में you actually define the range that it is going to distribute IP from this range to this range. ऐसे हम define करते हैं DHCP server में. Always we do that. We define DHCP server what should be the range. Okay. Getting? Yes, sir. तो हमारे ऑफिस में भी, in our office also we have a router, Wi-Fi router, right? So the DHCP service is set up there, and because of that we are getting the IP automatically. We don't have to really put like this, use this and then put the IP. So when you give the IP manually like this, it's called static IP. Okay, but when you are
getting it from here, so we say opt-in from dynamically from DHCP. Okay, so you will get it from the DHCP like this. Is this clear now? Yes. Right. So that's why if I go to command prompt, if I say start CMD, if I go to command prompt like this, and if I say here IP config, so I'm getting the IP address here, but how am I getting this IP address? Automatically, right? Yes. See, the IP is what? What is the IP? Meenal, can you tell me what is the IP here for my Ethernet adapter? 192.168.1.6. So this IP I have not given it manually, right? So it has come automatically from where? Rufi? कहाँ से आई IP automatically? Yes, Rufi. From the DHCP Very good. From the DHCP service, which is running on our office router. service. Also on your home router where you're sitting, even you have Wi-Fi routers at home. Yes, It sir. is the same case. It is same case. Okay, and see the default gateway. Default gateway here is what? 192.168.1.1. And what is Yes. gateway? Gateway means what actually? What is gateway? When you say gateway means what actually does it mean? So when we actually say gateway means what it means? Broadcast address. Huh? Sir, broadcast address. अभी तो आपने कितने किए ना पैकेट ट्रेसर पे? You have done so many exercise on packet Yes, tracer. sir. Still I have Default to ask. gateway is Still I have in the to router, explain to you. sir. The router IP. Router IP, sir. The interface of the router has this Yes, particular IP. that is the default gateway. Router interface has this IP, right? So this is a default IP, correct? What Yes, we sir. have here is a default IP like this, correct? Am I right on this? Yes. Hmm. So here we have, when I say, if I want to know what is my DHCP server, now ये जो IP जो है router का है, वो router अपना DHCP करके भी काम कर रहा है. If I say IP config/all, here you can see, you see this DHCP server, right? 192.168.1.1. Default gateway also. It's default gateway as well as it's a DHCP server, right? Yes, sir. So normally that is the case. So can you check in your laptops? Have you connected through laptops, Rufi and Minal? Yes, sir. Can you just check? You can also check on your computer. You will find the same thing. आपका default gateway और DHCP server same रहेगा. Rufi, are you connected through laptop? Rufi? No, sir. अरे यार लैपटॉप किधर गया आपका? तो लैपटॉप है ना. तो उससे कनेक्ट करने का ना. Can you share your screen, Minal? Yes, sir. Let's see. What is the case with Minal? Minal, share your screen, please. Yes, sir. Sure. Rian, you're getting? Yes. So can you see? Wait a minute. अभी तक आया नहीं, आ रहा है स्क्रीन आपका. वो आसाम में हो ना? आसाम से चल के आता है ना स्क्रीन. वो क्या करें? देर सर से. आसाम में नहीं हूँ. गुड़गांव सॉरी गुड़गांव. इतना तो दूर से ज्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकती. तो इतने दूर से स्क्रीन आएगा तो थोड़ा देर से आएगा ना, है या नहीं? ठीक है, चलो करो, बताओ. सर हाँ. अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है. करेक्ट. फिर अभी कॉन्फ़िग आईपी कॉन्फ़िग मैडम, सब उल्टा पुल्टा की कहानी है आपकी. आईपी आपके ऊपर एक सीरियल बना रहा हूँ उल्टा पुल्टा. आईपी कॉन्फ़िग, नो स्पेस इन. स्पेस नहीं होना चाहिए ना. एक सीरियल आपके नाम से बना रहा हूँ.
सर वो बन चुकी है ऑलरेडी। नहीं वो उसकी थी ना जसपाल भट्टी की, अभी मीनल घोष की बनानी है ना मुझे। ओके हो गया। यस सर। तो ये आपको आईपी मिल रहा है 192.168.0.107 और आपका डिफॉल्ट गेटवे क्या है? सर 192.168.0.1। ओके करेक्ट, दिस इज योर डिफॉल्ट गेटवे, करेक्ट राइट? यस सर। अभी इसके नीचे वो कॉन्फ़िग स्लैश ऑल दीजिए, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल दीजिए। ओके लिखो, ये कमांड लिखिए आप रियान, राइट डाउन दीस कमांड्स। सर config/all दिया तो ऐसा आईपी क्यों आ? कॉन्फिग मैडम, अच्छा आईपी IP config कॉन्फिग ना? हाँ। स्लैश ऑल, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल। ये सेकंड वाला कमांड क्या है सर? यूजर स्लैश दिख रहा है आपको DHCP सर्वर? Yes sir, DHCP enabled. Yes. हमारा नाम बट उसका क्या है, आईपी क्या दे रहा है आपको? विच इज योर DHCP सर्वर, उसका आईपी क्या है Yeah. DHCP सर्वर? 192.168.0.1 गेटवे और इसका सेम है सर। हाँ तो राउटर इज गेटवे ऑल्सो है, प्लस राउटर में ही आपका जो वाईफाई राउटर है, विच एवर वाईफाई राउटर यू आर यूजिंग, इट इज ऑल्सो हैविंग अ DHCP service which is running inside. Okay, so the DHCP service is also running on it. Getting now? Yes sir. अरे बंद क्यों किया शेयर? नहीं किया सर। हाँ। Keep sharing. Yes sir. So DHCP gives IP address automatically, but on lease. Rental पे मिलती है हमको IP address. The IP address we are getting on rental. So we get the IP address, but we get it on rent. Getting me? So if you see here, लीज ऑप्टेन दिख रहा है आप? लीज ऑप्टेन, लीज एक्सपायर्स, जरा पढ़ो क्या लिखा है। अरे रिसेप्शन। Yes sir, lease obtained Tuesday, May 14, 2024. Lease expired Tuesday, May 14, 2024, but इनका टाइमिंग अलग अलग है सर। 6-8 PM और ये 8 को एक्सपायर हो जाएगा। सर does Correct. that mean कि हमारा आईपी इसके बाद चेंज हो जाएगा? After तो how ये much time? After 2 hours, after right? 2 hours, yes sir. No, it get renewed automatically. अगर if your system is connected, still connected to the network, it will get renewed. Otherwise, it will change. But doesn't matter. आपको क्या IP मिल रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका Facebook on होता है वो important है ना? What IP you are getting, it doesn't make any difference. What IP you are getting, your Facebook should be on. That's IP can change at a particular internet connection, or is it that it stays the same? what IP? IP address, can it change, or is it the same always in one household, for It can example? change. It can change. Dynamic है ना? हाँ, हाँ, अगर आपने लैपटॉप थोड़ी देर के लिए बंद करके रख दिया 4-5 घंटे के लिए, हो सकता है वो लैपटॉप आपके किसी दूसरे मेंबर को मिल जाए वो पर्टिकुलर आईपी। okay. रेंटल पे दिया ना, लीज एक्सपायर हो गया तो देन इट विल टेक बैक दैट आईपी। बट इफ योर डिवाइस इज कनेक्टेड फॉर जैसे 2 घंटे से ज्यादा कनेक्टेड है या 1 घंटा और कनेक्टेड रहेगा तो ऑटोमेटिकली रिन्यू होता है। 50% जब लीज एक्सपायर होता है और आपका डिवाइस अगर ओपन होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे और वो 1 घंटे के लिए एक्सटेंड हो गया, समझे क्या? 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए व्हाटएवर, तो लीज रिन्यू होते जाता है। ओके, Okay, बट sir. अगर आप आउट ऑफ नेटवर्क चले गए तो वो फिर वो आईपी दूसरे को देने के लिए मोकला हो गया। Okay. But we are least concerned because we are just client, we are just users, right, of the network. So what IP we are getting, we are not really bothered much. It is not Yes. going to really bother us much. कौन सा IP हमको वो कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं है। Getting me? Yes, sir. तो इस तरह से चलता है वो। Clear now? Yes, sir.
यूजर स्लैश जो हमारा यूजर नेम रहेगा उसके आगे फिर कुछ एंटर IP config/all. IP config/all. रूफी समझ में आया आपको? Yes, sir. So this is the general scenario of DHCP, right? तो क्लाउड में भी आपका DHCP होगा. जब आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको IP मिलेगा. आपने एक बार नेटवर्क क्रिएट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप जो सिस्टम्स बनाएंगे तो सिस्टम्स को एक IP मिल जाएगा ऑटोमेटिकली DHCP के जरिए. So you should know what is DHCP. I hope it is clear now. DHCP. Yes, sir. It is DHCP clear. service, it assigns IP address automatically and on lease period. Yes, So sir. so we can say static IP and dynamic IP. What is static IP? Sir, Static. when the IP is given to somebody manually, that is static IP, and when Correct. it is given through DHCP, then it is dynamic IP. Very good. God bless you. Correct. Absolutely. Okay. Yes, sir. Clear now? Yes, sir. Yes, sir. Then, okay, let's go to the next concept now. If you have any doubts about DHCP, tell me now only. Anything not understood, tell me now. Any questions from anyone? No. Sir, why it Oh. is called protocol? Why it is called protocol? Acha. What is protocol? What is the meaning of protocol? Protocol is like, I can explain with example what I understand that, for example, for the security of some VIP, someone very important, there is a protocol or a rule that is followed Hmm. in order to, keep that thing or person secure, like very high security or high confidential thing. That is a certain strict rules are protocols or steps. Hmm. So here why we have protocol word used. Okay, so I'll explain you what is a protocol. Just a second. I'll just make the device settings to computer speaker so Rian can also hear what you guys are talking. Right? Yes, sir. Device is So coming on the do I headphone. still share the screen or you will share your screen? हाँ, रहने दो, क्या problem है? Screen share कर रहे हैं ना. Alright. Protocol means rules for communication. Yes. Protocol is like some method of doing job. सर आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है. बहुत दूर से आ रही है. हाँ. ऐसा क्या होगा? एक मिनट. अच्छा अभी दूर से आ रही है क्या? ऐसे लग रहा है. दिस इज बेटर सर. ये अभी आ रही है ठीक आवाज तेज आ रही है अभी. अभी कैसा आ रहा है? Yes sir. Yes sir. It is good. अभी बेटर आ रहा है? Yes sir. It is better. Okay. So there are many ways of driving. Left hand side driving होती है, right hand side driving होती है कि नहीं होती है? Yes sir. होती है. So some countries they will do left hand side driving, some countries they will do right hand side driving. Okay. Yes. So that is what you mean by protocol.
Protocol is way of doing a particular thing. Hmm. So DHCP protocol, dynamic host configuration protocol, means it's a protocol by which it's a rules, some rules they have set by which it is going to give the IP address to the devices and it will take it back. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका डिवाइस कनेक्टेड है नेटवर्क को 50% टाइम होने के बाद it is going to you know renew automatically. तो ये प्रोटोकॉल के जरिए हुआ ना, समझा? Yes, sir. So it's all predefined things. That is protocol. So protocol is rules for communication. Okay. Yes, sir. Protocols is rules for communication. Yes. Protocol is rules for communication. Okay, done. Any other question? No, sir. Okay. The second thing is we have to study something called DNS. Let's see what is DNS. So let me share my screen now. Yes, sir. So DNS क्या होता है? So tell me one thing. What is easier to remember, the name of person or the phone number of the person? Name. Name, Rofi, sir. आप भी बोलो. Name, sir. Name is easier to remember. So same thing in networking also. What is easier to remember, the IP address or the name of the computer? Name of the computer. Okay. Yeah. तो वही होता है कि in network we don't want to remember or connect to a system by name, number, IP address. Rather you want to connect by the name. Are you getting me? Yes, sir. हमको कनेक्ट करना नेम से, नॉट बाय आईपी एड्रेस. तो जब हम नाम टाइप करते हैं, जैसे कांटेक्ट पे क्लिक करते हैं अपने मोबाइल पे, तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस? Name comes up and below that number. That name gets converted to phone number and then you connect, right? Yes, sir. Name gets converted to phone number and then you connect, right? So same thing आपका इंटरनेट पे भी होता है या नेटवर्क पे भी होता है. जब आपने किया www.facebook.com, तो क्या होगा? That name will get converted to an IP address. IP. By which system? DNS system, domain name system. So what is the job of DNS? To convert or translate, resolves domain name to IP address and vice versa. It resolves domain name to IP address and vice versa. Got it? समझा अभी आपको? Yes, sir. It translates domain name to IP address and vice versa. The So we DNS have server is also something. No? Is this the same DNS and DNS server? yeah, same. Yes.
DNS server is a machine on which the DNS service is running, so DNS server बोलेंगे उसको. Sir, sorry, repeat. DNS server will be a computer on which a DNS service is running. So DNS computer or any device. DNS server is a computer or a device on which DNS system is running. DNS service is running. Okay, clear? Yes, sir. Right now? Yes, sir. But it can do vice versa. Vice versa means if you give an IP address, it can give the name also. जैसे आपने किसी का नंबर टाइप किया मोबाइल पे, नाम सेव रहेगा तो उसका नाम भी आ जाता है ना, आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. Like that. But the thing is हमारा जो फोन नंबर्स है, फोन नेम्स जो डालते हैं हम फोन में, कॉन्टेक्ट्स जो कर रहे हैं, what is happening, everybody is having their own contacts. सबका कॉन्टेक्ट लिस्ट अलग अलग है, राइट? Am I right? Yes, sir. तो सिंगल नेम है, तो सिंगल नेम में क्या प्रॉब्लम आएगी? सपोज सिंगल नेम रखें तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वो सरनेम्स की वजह से जंबल अप हो जाएगा ऐसा. नेम कैन रिपीट ना, सो मेनी पीपल हैव सेम नेम, राइट? रिपीटेड नेम्स का जंबल Yes, sir. सो रिपीटेड नेम की प्रॉब्लम आ जाती है सिंगल रहेगा तो, राइट? Yes, sir. सो वी हैव इश्यू ऑफ रिपीटेड नेम्स, राइट? अगर सिंगल नेम रहेगा तो रिपीटेड नेम की इश्यू आ जाएगी, करेक्ट? Yes, sir. तो व्हाट वी नीड टू डू, के इसलिए हम unique identity. इसलिए हमारा सरनेम होता है. Hmm. जैसे मेरा नाम है मनोज खंडेलवाल, Hmm. लेकिन मनोज खंडेलवाल ही बहुत हो गए. मेरे सगे रिश्ते में दो मनोज खंडेलवाल है, तो एक पुणे में भी है एक, और एक मनोज खंडेलवाल. वो कार बेचता है, मैं कंप्यूटर बेचता हूँ, तो उसके फोन मुझे आते हैं कभी, अरे वो कार का क्या हो गया, और मेरा फोन उसको जाता है कभी कभी, अरे वो कंप्यूटर का क्या हो गया. हेलो, सुन रहे हैं ना आप लोग क्या? सुन रही हूँ सर. हाँ, तो इसलिए मिडिल नेम भी डालते हैं हम, राइट? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो तीनों मैच होना बोला तो फिर कुछ तो भी ऊपर पाप करके आए लगता है, तब सेम नहीं होता है. पाप या पुण्य पता नहीं क्या करके आए. तीनों से रहते हैं नहीं रहते. नहीं रहता, तीनों सेम जनरली नहीं बहुत होता. rare है. मैंने आज तक नहीं देखा. मैंने भी नहीं देखा. सर. नंबर अगर सरनेम के बाद नंबर डाल दिए तो ऐसा मतलब 1 2 3 वैसा नहीं है कुछ सिस्टम. सो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, राइट? Yes, आपने sir. कभी देखा फर्स्ट नेम मिडिल नेम भी सेम है, लास्ट नेम भी सेम है, ऐसा कभी नहीं होता है, राइट? हुआ है कभी? No, sir. फादर का नाम तो अलग रहेगा ना. बट कभी कोइंसिडेंस हो गया तो, कॉमन फादर नेम भी बहुत सारे होते हैं ऐसे. हाँ, हाँ मतलब जो बट तीनों चीज सेम होना जरा मुश्किल है, राइट? Hmm. ओके, रूफी. Yes, sir. सो इसी वजह से हमारे नेटवर्क में भी हायरार्किकल नेम दिया है, जैसे www.facebook.com. खाली फेसबुक बोले तो रिपीटेशन हो सकता है, बट www.facebook.com रिपीट नहीं होगा. समझ में आया अभी why we have long names like this? Right? Everybody's clear? Yes. So if you want to know the names and the IP address, so there's one utility called ns lookup. See, again I'm going to the command prompt. दिख रहा है command prompt? Yes, sir. तो यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ ns lookup www.facebook.com, तो देखिए ऐसा आया. तो उसका IP एड्रेस ये है 157.247.35. दिस द IP, ये इसका IP है, ठीक है ना? Yes. तो ये IP अगर हम डायरेक्टली ब्राउजर पे डालेंगे तो हो सकता है कि फेसबुक ओपन हो जाए. ट्राई करें क्या?
सर ओपन हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। यस सर। मीनल बोलती तो जरूर होगा, पता नहीं। तो जहाँ तक लगता है मीनल की भविष्यवाणी सत्य होती है। डाला यार, प्राइवेसी एरर आया, एडवांस, ओके, प्रोसीड टू अनसेफ। ये देखो बोल रहा है ना facebook.com, फेसबुक का सिंबल तो आ गया। बट सिक्योर कनेक्शन नहीं है इसलिए नहीं खुलेगा। हाँ सिक्योर नहीं इसलिए बिकॉज सर नहीं। HTTPS होगा तो सिक्योर होगा, S नहीं है तो मतलब नॉट सिक्योर है। हाँ तो थोड़ा सा उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको। नहीं हुआ। लेकिन लेट मी ट्राई। क्या है आईपी? 157 पॉइंट 247 पॉइंट 3 2 3 237 30। पॉइंट 35। ठीक है कोई बात नहीं। कभी कभी अभी क्या उन लोग डायरेक्ट आईपी से ना एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा ये करते हैं। सर पर आपने दिखाया है पहले भी खोल के। दिखाया है ना। आपने दिखाया भी था कि फेसबुक का आईपी या हम किसी भी इसका वेबसाइट का आईपी कैसे जान सकते हैं। ओके आपने ये एनएस एकदम का। स्टार्टिंग में दिखाया था। हाँ। हाँ गुड, आपको याद है हाँ? अच्छा मेमोरी आपका। ये देखो CNN.com, इसके तो कितने आईपी है। चलो ये डालते दैट हैं। मीन्स ये अलग अलग लोकेशन से हो रहा है सर। नहीं ऐसा नहीं, कभी कभी वो लोड बैलेंसिंग भी होता है ना। हाँ। देखो अभी इसका आईपी डाल रहा हूँ मैं, 151.101.3.5। तो क्या आया ये भी ऐसे हो रहा है, दिल है कि मानता नहीं। तो पिक्चर देख के आया लगता है ये सब, दिल है कि मानता नहीं। तो फॉर सिक्योरिटी रीजन हम लोग अलाउ नहीं कर रहे, बट हाँ दिस इज द फैक्ट। आईपी से नहीं खोलने दे रहे कहीं। यस। पर उनके खुद की कंपनी के अंदर तो खुलता होगा। मैंने वो कंपनी में जाके देखना पड़ेगा अभी। ये मतलब जहाँ सिक्योर कनेक्शन उनको मिलता रहेगा वहां तो वो खोलने देते होंगे। एनीवे तो इस तरह से आपको कोई भी सर्वर का आईपी मिलेगा, राइट? सर क्योंकि मैंने खोला है 192 पॉइंट समथिंग समथिंग करके क्लाउड का अलग अलग मतलब लोकेशन का हमारा था तो मैंने खोला है ऐसे करके। हाँ। हाँ तो मुझे याद है कि खुलता है। हम्म। राइट। ठीक है समझा अभी आपको इतना। यस सर। सो दैट सर इज डीएनएस। आप सॉफ्ट टूल का डालकर एक बार खोल के दिखाना, आपका भी तो वेबसाइट होगा। ठीक है यार, सब मेरा ही पोल खोलोगे आप सब। तो वाई आई एम टेलिंग क्योंकि आपका खुद का कनेक्शन सिक्योर होगा ना, इसलिए आई थिंक। ये देखिए अभी चलो खोल के, ये भी एक्चुअली नहीं खुलेगा, ये बाला साही पे जाएगा कुछ तो भी। लेट्स सी क्या होता है। इस पे समथिंग कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन ऑफ दिस आल्सो। एक आईपी में उन लोग काफी सारे वेबसाइट्स होस्ट करते हैं। इट माइट गो टू सर्विस अनअवेलेबल अनअवेलेबल। because nowadays in on one web server they are hosting many websites also। जैसे हमने जहाँ पर होस्ट किया ना, तो वो क्या करते हैं, एक सर्वर पे बहुत सारे वेबसाइट होस्ट करते हैं। डेडिकेटेड वेबसाइट रहेगा तो खुल जाएगा, अगर शेयर्ड वेब सर्वर रहेगा तो नहीं खुलेगा ऐसे। ठीक है। ओके ओके सर। एनीवे आई थिंक यू गॉट द आइडिया व्हाट इज डीएनएस। यस सर। याहू तो खुलेगा कब से, याहू विल नॉट डिसअपॉइंट। लेट्स सी याहू देखते हैं। याहू, अरे बाप रे, इसके भी कितने आईपी है।
तक लोग याहू यूज करते हैं, मतलब 180.222.114.12 ये खुल गया We'll be लेकिन right साइड back. डाउन है Thank you for your patience. Our engineers are working quickly to resolve the issue. Okay. ठीक है, तो हो रहा है ना ये, यस सर ऑलमोस्ट परमात्मा तक पहुंच रहे हैं हम लोग. क्लियर? DNS is clear. Domain name system. यस सर So that's what is required on the cloud also. If you want to host some service and you want to access by name, तो आपको DNS register करना पड़ेगा, एक नाम register करना पड़ता है against that IP. And I hope you know what is public IP and private IP. Rufi, what is public IP and what is private IP? What is the difference between two, Rufi? The public IP is Wi-Fi that we use, internet. And private IP? Private IP is for office users. Office users. Private IP. Yes, office and home use के लिए private IP use करते हैं. Public IP is used on internet. Wi-Fi नहीं बोल रहा, internet पे. Public IP is used on the internet, right? So ये दोनों में फर्क है. This is the difference between the two, right? Yes, sir. यस सर Okay, so the DNS part is done. Yes, sir. So NS lookup utility is used to diagnose or check the DNS. ये भी लिखा आपने, जी, जी, हाँ, एक मिनट। इसका स्निप ले लिया. यस हाँ, सर yes, sir. Okay. Okay, about public and private IP, we just discussed. So internet uses public IP, right? यस सर But what is the range for private IP for class A? Which IPs are reserved for private use in class A? Who can tell me? Sir, Class A, अच्छा, before asking that question, let me ask you this question ki, what is the range for class A IP? between 10 से लेके नहीं, plus ये आएगा। क्लास ए आईपी का क्या रेंज होता है, बोलिए कोई. मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? 1 to 126. आवाज अच्छे से आ रही ना, मजबूत आवाज आ रही है ना? हेलो. यस सर आ रही है सर क्लास ए का रेंज है 1 to 126. 1 to 126. यस सर क्लास बी का क्या रेंज है, रूफी आप बताइए. 128 to 191. वेरी गुड. क्लास सी का रियान बताओ. 128 to 190. 128 to 220. 223. 128 to 220. 223, करेक्ट. सर क्लास सी का 1 192. 192 या 192 से लेके 223. यस सर तो ये कंप्लीट रेंज हो गया. बट आउट ऑफ दीज some addresses are reserved for private use. So which are those addresses? That is my question. So class A में which addresses are reserved for private networks or private use? Can you tell me, Minal, for class A? यस सर 10 point and then the rest of it. Yes, anything starting from 10 is Yes, for sir. private use. Yes. Anything starting from 10 is for private use. Class B, 172.16 to 172.31. 172.16 and that starts with 172.31.
Yes. So 172.16 to 172.31, right? 172.16 से लेके 172.31, right? This is the private use. So the thing is, if you want to use internet, then you need a Private We need public public IP. IP. sir. IP, हाँ. बट आपका आईपी जरा देखो, नजर घुमाओ, जो आईपी आप यूज कर रहे हैं ना, देखो मेरा जिस आईपी है यहाँ पर, व्हेन आई से आईपी कॉन्फिग आई गेट आईपी, राइट? हाँ. सो व्हाट आईपी आई एम यूजिंग हियर? व्हाट इज द आईपी एड्रेस? 192.168.1.6. करेक्ट, ये प्राइवेट है सर. प्राइवेट आईपी, बट आई एम एबल टू यूज इंटरनेट. हाउ इज दैट पॉसिबल? आप आपका भी चेक करो. मीनल, व्हाट इज योर आईपी? प्राइवेट आईपी क्या Yes, है sir. आपका? आईपी क्या आ रहा है? Did you say IP config? So what? Sir, when I did IP config, the IPv4 address, it is 192.168.0.107. मेरा तो That's a private IP, correct? yes, sir. So how come you are able to use the internet using private IP? That is my question. Sir, through default gateway. Default what? So is default gateway allowing us to use the internet? So private IP is being, we are using private IP, but actually if you go to the browser, see if I go to the browser, just see, understand this. I'm going to the browser here, right? So यहाँ पर, if I go to Google, and if I say what is my IP, I say like this. Public address. What is my IPv4? IPv4 और IP अलग होता है. IPv6 भी है ना आजकल. हाँ, यहाँ पे है IPv4. हमारा IPv4 है ना. हाँ, तो you can see what is my IP address. इस पे जाएंगे ना, तो just see what happens. Let's see what is happening here. So it's giving us this IP address. This is public. Yeah, this is a public IP address. Getting me? तो ये आपका public IP address हो गया. Actually, this is the public IP address which is set on the router. And public IP address हमको मिला because we are an organization, we are a company. So we have taken public IP address from the internet service provider by paying some extra amount. Getting my point? Yeah, Rufi? Yes, sir. तो ये पब्लिक आईपी मिला है, एक पब्लिक आईपी मिला है हमको. एक्चुअली दो मिले, हम एक राउटर पे यूज कर रहे हैं. एंड दैट पब्लिक आईपी इज शेयर्ड बाय ऑल द पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. इससे लोकेशन भी ट्रैक होता है. हाँ होता है ना, ट्रैक होता है. मैप पे है इसलिए पूछ रहा हाँ, ये क्या सिटी मुंबई, भारती एयरटेल, आईएसपी, महाराष्ट्र, इंडिया, ऐसा नियर So अबाउट लोकेशन router मिलेगा. is the gateway ना, right? हाँ, Router ही gateway है ना अपना default gateway. राउटर इज
डिफॉल्ट गेटवे नहीं है। राउटर को दो आईपी रहेगा, एक आईपी होगा जो प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट, राउटर, व्हाट इज राउटर? राउटर इज अ डिवाइस व्हिच कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स, राइट? यस। तो हमारा जो वाईफाई राउटर है ना, वो दो नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। कौन से दो नेटवर्क? एक आपका प्राइवेट नेटवर्क है जहां हम बैठे हैं ऑफिस में, राइट? और दूसरा Yes. पब्लिक नेटवर्क जो इंटरनेट है। तो राउटिंग का काम कर ही रहा है ना वो। गेटिंग मीनल? यस सर। तो आपका भी जो राउटर घर में है वो भी राउटिंग का काम कर रहा है। आपका घर का एक नेटवर्क है और एक इंटरनेट है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना। यस सर। बट इतना ही कि जो हमारा पब्लिक आईपी है हमने परचेस किया हुआ है, हमारे राउटर पे है। और अगर मीनल भी देखे, मीनल कैन यू शेयर योर स्क्रीन? आपको भी एक पब्लिक आईपी मिलेगा। लेट्स सी हर स्क्रीन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, राइट? सो मीनल, कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? यस सर। Sir, देखो can ये you see पब्लिक my आईपी screen? आपका। Yes, we can see your screen. This is your public IP, which is your internet presence. But the thing is, you have not taken this public IP. Hmm. This public IP is set on some router in your area. And आपके नेबर को भी देखेंगे तो उसको भी ये पब्लिक आईपी दिखेगा if they are using same service provider. Okay. Getting? Yes sir. तो कहीं ना कहीं आपके एरिया में आईएसपी ने राउटर सेट किया है, उस पे एक पब्लिक आईपी उसने डाला हुआ है, and that is getting shared by all. Getting now? Yes sir. तो मतलब आप इंटरनली प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हैं, बट व्हेन यू एग्जिट फ्रॉम योर नेटवर्क, यू गो टू इंटरनेट, you are using this one public IP. Clear now? So your private IP is getting translated to public IP. Are you getting, Yes sir. madam? Yes Getting? sir. Yes sir. So that is called as, in the networking terms, we will call this as NAT, Nat. NAT protocol. So NAT protocol use होता है हमेशा आपके राउटर में, और क्लाउड में भी ये NAT वर्ड काफी बार आएगा. When you set up things on the cloud, you will hear these terms NAT many times. So sir, the answer to your question is that if we have a private IP, then how we are able to use internet, which is a Hmm. public IP? The answer to it will be that our private IP gets translated to public IP, and that's how Very we good. are able to use it. Correct, correct. God bless you. क्या बात है? आज क्या नाश्ता Seriously, किया मैडम आपने? क्वेश्चन अच्छा है सर ये। काफी ट्रिकी मतलब है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो नहीं बता पाएगा कैसे हो गया। हाँ, नाश्ते में क्या खाया आपने? ये मैं पूछ रहा हूँ। इतना फास्ट आंसर दे रहे हैं आज, क्या बात है? आई एम वेरी हैप्पी. I'm गुड glad गुड. sir I attended this class, मिस नहीं हाँ हुआ। I'm glad sir, इंटरेस्टिंग है आज का टॉपिक। हाँ, अभी आपने डिफिकल्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया जो था ना. मैंने बहुत आपको ग्रिल किया, सबनेटिंग, आईपी, ये सब. अभी थोड़ा आपको इजी जाएगा. यस। आपने अग्नि परीक्षा पास कर ली बोलते ना, उससे मैं आपको चला चुका, अग्नि से लेके गया हूँ. अभी थोड़ा ठंडी हवा भी आएगी. ओके. तो नाउ यू विल एंजॉय द कोर्स. पहले भी एंजॉय किया, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड विद यस दोस सर, चैलेंजिंग, सबनेटिंग. फुल मैंने कितना चैलेंजिंग एकदम। कितना कितना आपको एक्सरसाइज दिया, राइट? यस सर। So, but that is very important. What I taught you before, subnetting and all that thing is very very important. But ये भी आपको सर क्वेश्चन इधर, जब जब हमारे पास ये DHCP था which automatically gives the IPs, तो फिर मैनुअल IP करने की जरूरत क्यों आई? हाँ, मैन्युअल आईपी करने की जरूरत क्यों आई? हाँ अगर मतलब छोटा why we नेटवर्क have है to। तो if you have a small network of 2-3 PCs, तो why we want DHCP? Now we can give manual. That is one thing. Okay.
बट आजकल तो वो भी कौन मेहनत कौन करेगा, आईपी कौन देते बैठेगा, राइट? मैन्युअल आईपी आप कोई सर्वर रहेगा उसको मैन्युअल आईपी दोगे, जो ऑटोमेटिक आईपी आता है वो चेंज भी हो सकता है। आपने देखा ना, आपने क्वेश्चन पूछा था ना हाँ कि मेरा आईपी चेंज होगा, मैंने कहा हाँ हाँ हो सकता है। अगर आपने लैपटॉप बंद करके रखा बहुत देर तक तो हो सकता है आपका आईपी आपके दूसरे हाउस के मेंबर को चला गया। आपको जब आप चालू करेंगे आपको दूसरा रेंटल पे देगा, लीज पे देगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज योर क्लाइंट साइड यू आर जस्ट एक्सेसिंग इंटरनेट, यू आर डूइंग स्टफ। yes आपको कौन सा आईपी मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इफ योर कंप्यूटर इज अ सर्वर इज गिविंग सम सर्विस टू द पीपल, देन इट्स इंपॉर्टेंट टू फिक्स द आईपी। तब मैनुअल देना है उसको, उसके लिए रिजर्व करना पड़ता है आईपी। अंडरस्टूड? तो उसका आईपी आप चेंज, उसको स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा सर्वर्स के लिए। सर्वर्स आर दोज सिस्टम्स व्हिच गिव सर्विस टू अदर यूजर्स इन द नेटवर्क, तो उसको हमको फिक्स्ड आईपी देना पड़ेगा। गेटिंग yes sir गेटिंग मीनल? yes sir क्लियर? तो दैट इज द होल थिंग। राइट? योर क्वेश्चन इज आंसर्ड नाउ मीनल? yes sir बिकॉज because सर्वर इज लाइक अ शॉपकीपर। शॉपकीपर अगर आपका उसका रोज का एड्रेस चेंज करे, शॉप का एड्रेस, कि आज इधर कल उधर, तो व्हाट विल हैपन? inconvenience इनकन्वीनियंस हो जाएगी ना। आज इधर है, कल उधर है, परसों तिधर है, तो क्लाइंट्स को मिलेगा नहीं। इसलिए सर्वर इज लाइक अ शॉपकीपर, तो उसको फिक्स आईपी चाहिए। right तो इसलिए उसको डीएनएस नेम भी दे सकते, कुछ नाम भी दे सकते, तो नाम से वो आईपी में ट्रांसलेट होगा और कनेक्ट होगा। पीपल विल कनेक्ट टू दैट। आपका फेसबुक का आईपी आए दिन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? कहाँ प्रॉब्लम हो ढूंढेंगे सकता है ना, क्या हो गया लोकेट नहीं कर पाएंगे। चेंज हो भी सकता है, इसलिए वो नाम, जैसे अभी मैंने अपना फोन नंबर चेंज कर दिया तो क्या होगा, मुझे सबको है ना पार्टी देनी पड़ेगी कि मेरा नंबर चेंज हो गया, देखो ये है वो है। बट अगर मैंने डीएनएस सिस्टम यूज किया मेरे फोन के लिए, या कल को जाके डीएनएस सिस्टम आता है तो आपका नंबर चेंज भी हो गया तो नाम तो वही रहेगा, खाली वो उसका मैपिंग चेंज करना पड़ेगा, जिससे नाम वही डालेंगे। जैसे कोई, हाँ वैसे ही, हाँ ठीक है ना, yes sir तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? गेटिंग? yes sir एनी अदर क्वेश्चन मैडम? no sir So this is called NAT. Okay. So NAT is something which you are always using. You like it or you don't like it. You are तो using. मैथ का Are you फुल फॉर्म convinced? Network address translation. So are you convinced that you are using NAT every day at home and office? So this is the scenario. तो यहाँ पर मैंने ड्राइंग भी, ये खुद से ड्राइंग निकाला है, सब इतनी मेहनत करी है, स्टूडेंट्स को सिखाते सिखाते सब ड्राइंग बनाया है सबके। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया, देखो जस्ट लुक एट दिस, दिस वाईफाई राउटर, वो आपका DHCP सर्वर करके भी काम चल रहा है, नेट करके भी चल रहा है, और ये आपका पब्लिक आईपी, देखो ये पब्लिक आईपी हमारा। बट यहाँ पर ऑफिस में कौन से आईपी यूज हो रहे हैं? प्राइवेट नेटवर्क। बट जब वो इंटरनेट पे कनेक्ट होगा तो किससे कनेक्ट होगा? पब्लिक आईपी से कनेक्ट होगा। सो आईपी एड्रेस इज शेयर्ड विथ प्राइवेट नेटवर्क, राइट? क्लियर? इसका स्निप ले लिया आपने? yes sir take टुक इट? श्योर? yes
Okay, so cloud is what? Cloud is a multi-tenant network. Example Azure, AWS, Google Cloud, multi-tenant. Multi-tenant मतलब क्या? Cloud is a rental service, subscription service, right? Yes. So multi-tenant means what? Multiple people will rent this service. So, multiple users. Multiple companies are taking on rent and they are isolated from each other. Like we are taking some service from cloud, some other companies taking service from cloud, but they are isolated. So that's why it's called multi-tenant network. And it's a subscription-based service. So popular cloud services are clouds are Azure, AWS, Google Cloud. These are popular ones nowadays. Getting me? Yes. Yes, sir. Clear? गेटवे तो हमने देखा है. You know what is router, you know what is public and private IP. Okay? Yes, sir. Types of service also which before. Yes. Sir, we will take the snip of them. Of what? 5 after 5 numbers, like 6 number and all. हाँ, we'll snip just ले take लो. the snips, sir. After हाँ, cloud. 5 ये ले नंबर का लिया. लिया snip. ये हाँ सर ले लिया. 6 नंबर का नहीं सर ले रहे हैं. ले लो. लिया ना? ये गेटवे IP address of the router connected to your network. यस सर गेटवे का ले लिया. अब राउटर का. लिया? तो Then गेटवे का router. ले लिया सर. हाँ अब राउटर का. ट्रेसर यूटिलिटी भी आपने देखा है ना, ट्रेस करता है ना पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. Yes. You have seen this tracer utility, right? Yes. Yes or no? ट्रेस सर ट्रेस रन करना होता है ना. Tracer. जैसे देखो अभी अच्छा ट्रेस. look here in my screen. If I say tracer www.facebook.com, yes, ये बताएगा कि so it went to our router, then it went to the Airtel का broadband router. Airtel किधर पहुंचा ये? So it will show all the routers in between, how the message is reaching to the facebook.com. So between our computer and that Facebook, there are many routers in between. Yes. So it's showing all the path. Getting? Yes sir. What did you tell? Tracer then. राइट सर ये कर लिए. हो गया? यस ठीक है? सर. यस सर. कोई भी रूट ट्रेस करना तो इस तरह से आप ट्रेस कर सकते हो. सर जब भी कहते हैं कहीं ट्रेस रन करना है तो इज दिस द सेम थिंग, मतलब उसका पाथ ट्रेस कर रहे होते हैं हम. सर कभी कहते हैं ना ट्रेस रन करना होता है ऑन सम सर्वर समथिंग समथिंग. तो इज इट दैट वी आर ट्रेसिंग द पाथ, मतलब रूट ट्रेस कर रहे होते हैं किसी. हाँ, कभी कभी क्या होता है कि डिले हो रहा है, सपोजिंग
या कहीं ब्रेक हो गया, कहीं कोई सर्वर रीच नहीं हो रहा है फॉर एग्जांपल, सो यू कैन यूज ट्रेसट कमांड टू सी कि कहाँ ब्रेक हो रहा है कनेक्शन, राइट? इट विल जस्ट नॉट रीच देयर टू द डेस्टिनेशन. So traceroute command is very useful in that situation for fault finding, for troubleshooting. Okay, Clear? sir. Yes, sir. Then we have discussed about the public and private IP, right? ले लो उसका snip ले लो. Yes. ठीक है? Okay. Yes, sir. Then types of services on cloud. ये भी हमने देखा है पहले. सर्विस, प्लेटफॉर्म सर्विस. Software service, we have done that before, right? तो यहाँ पर example दिया है, this is like a playground. PAS is like a playground plus stadium stands मिला है आपको, right? In sense, SAS में प्लेग्राउंड, स्टेडियम एंड एम्पायर. stadium stand plus umpiring भी मिल गया आपको, correct? यस. Yes, sir. Then we have this port number. So is something new. इसका लो snip. Port number. So port number क्या होता है? It is like see, if you see your computer has only one interface, right? But you can connect how many websites you can run at one time, or how many browsing windows you can open at one time? Can you tell me? Sir, unlimited. I have. Unlimited. Yeah. तो देखा जाए तो आपके पास एक ही इंटरफेस है, बहुत सारे विंडोज ओपन कर सकते हैं. Don't you think जो डेटा आएगा it will get confused where to go? Don't you think it can happen, right? It will just Yes, get sir. confused कि where to go. So what do we do in that case? So in that case, we want to create something known as port number. So port number will identify कि where it should actually go. तो हर एक एप्लीकेशन जो विंडो खुलता है आपके सिस्टम में, it will have a particular port number. System will generate port number. So by port number, it will identify कि this traffic is routed for which application. Is this clear? So that's why I'm saying it is an application address within a computer. And we have some standard port numbers for servers offering standard services. तो हमारे कंप्यूटर में जो पोर्ट नंबर्स बनते हैं क्लाइंट साइड पे, वो कोई भी रैंडमली बनेंगे, बट सर्वर साइड में जो पोर्ट नंबर बनेगा वो स्टैंडर्ड होगा, बिकॉज अगेन सर्वर इज द शॉपकीपर. रूफी, आर यू लिसनिंग? रूफी, Yes, sir. so I will just tell you one story like how it is. I'll give you example of bank. Now tell me, bank offers what all services bank can offer? The savings account, Saving, lockers facility, loan facility, credit card, debit yes. card. ये मीनल बहुत जाती ना बैंक में, रोज जाती बैंक में, इसलिए हाँ सर, एक्चुअली मैं रोज जा रही हूँ, मैनेजर चेंज होती जा रही है, मैं जाती जा रही हूँ. हाँ, तो सब देखो कितने सर्विस गिना दिए, राइट? तो अभी बैंक का एड्रेस इज लाइक आईपी एड्रेस, उससे आप बैंक पहुंच गए, बट उसमें कौन से सर्विस चाहिए वो काउंटर पे जाना पड़ेगा. सेविंग्स आपका काउंटर नंबर 80 पे मिल रहा है, डिपॉजिट आपका 25 में मिल रहा है. ओके, सो इट्स नंबर से याद रखते हैं. नंबर से याद रखते हैं. हाँ, पोर्ट नंबर उसको बोलते हैं. हाँ, पोर्ट नंबर उसको बोलेंगे. बट अगर हर एक बैंक, जैसे बैंक ऑफ इंडिया में 25 नंबर काउंटर पे डिपॉजिट सर्विस मिल रही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 80 नंबर में मिल रहा है, और फलाने बैंक में 100 में मिल रहा है, तो कस्टमर को हमेशा जाके पूछना पड़ेगा ना. बट अगर सब बैंकर्स डिसाइड करते कि हम हमेशा डिपॉजिट सर्विस 80 पर ही देंगे, तो डोंट यू थिंक इट विल बी इजियर?
for the customers? Hello? Yes, sir. तो वही चीज है कि there's a common port numbers, standard port numbers for the services they have decided कि HTTP सर्विस रहेगा तो 80 पे मिलेगा, HTTPS होगा तो 443 पे मिलेगा, FTP 21 पे मिलने वाला. These are called standard port numbers. So all people, all servers, all in the world, they have reserved some common port numbers for such services. So again, server side, server is like your shopkeeper. So like a bank, which is giving you service, different services. So so for every service they have a particular designated port number. So it becomes easier for the users, for the applications to connect to server and to connect to a particular port number. They don't have to ask that if they want HTTP service, they don't have to ask कि which port number, which counter number. वो पूछने की जरूरत नहीं है. Got it? Yes, sir. Yes. Clear, Mr. Rufi and Minal? Yes, sir. So that is port number. समझा रूफी? समझ में आया? Yes, sir. So more of port numbers we'll see in the next class. And sir, also explain in next class what is FTP, SMTP. These are different types of services. हम discuss करेंगे अगली class में Okay, जरा. sir. Yes, sir. तो port number को हम फिर से थोड़ा elaborate करेंगे. I'll show you some more utilities by which you can check port number. So these are what I covered is the basics things. Yes. एक मिनट.